तो आज है सिस्टर्स डे आउट. Guys, look at this beautiful entrance. I can't believe it. This is like the real life Nagini from Voldemort. इतने सुंदर है यार ये. Welcome to Jerusalem. Guys, हम पहुंच गए हैं जेरूसलम. I love JLM. हम अभी बस ट्रेन से उतरे. Like you can see, this is the station, Jerusalem. It's Chak Navon. That's the name of the station, and we are now heading to Jerusalem's botanical garden. हम स्टेशन से जब बाहर निकलते हैं, there are two sides. This is like the other side, and the view is awesome. तो आज है सिस्टर्स डे आउट, and we have come all the way to Jerusalem. और आज का दिन we decided that we will vlog, so stay tuned. इतने खुले सड़कें हमें तेल अवीव में देखने को नहीं मिलते. So when we stepped into Jerusalem, also the weather is amazing. By the way, it's supposed to be summer, but it seems a little bit like spring kind of a temperature. So it is very nice. But you can see around me, we are actually waiting for a bus because we need to get there. But enjoy. तो क्योंकि आज सिस्टर्स डे आउट है, सिस्टर्स डे आउट, You can call it that. yeah. So we are going to get an update from my sister, from my बहना. एक हजारों में मेरी बहना है. How are you feeling today? I'm feeling great because the weather is great. Because during summer here, we living in Tel Aviv, like the heat is like super bad, just like India. So it's a good weather, like a pretty pleasant weather here that we're happy about. But India, you say it's a lot of suck single sites here where they're working. So too much noise, but Can't help it. Let's just go with it. yeah. देखो guys, लाइट ट्रेल जेरूसलम का. यहाँ पे तो ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पे जस्ट लाइट रेल है और पीछे if you can see, I don't know if you can see, there's a moving train, but this is the on ground light rail of Jerusalem. It's pretty cool. तो गाइज अपडेट ऐसा है कि मैडम ने हमारा स्टॉप मिस करवा दिया. Because she was in charge of travel today. Okay? 550 meters. Okay, so whatever. It's not that. But still, there's a reason why we came by bus, so that we don't have to walk so much. अच्छा. But ठीक है, हम कर लेंगे थोड़ा सा आज. Calories burn. हमें अब एक दूसरी बस मिल गई है. इतना भागे हम. But we finally got a bus in the other direction, so hopefully we'll be there soon. Guys, we have made it to Jerusalem's botanical gardens. और 5 मिनट चलना है, लेकिन we are close. तो मेरे सिस्टर का कहना है that this is 5-minute walk is actually great. मैं आपको अभी flip करके दिखाऊंगी क्यों. Like you're surrounded by trees, and like it's better not to get cars and just me, you know, in this weather. In this weather. इतना सुंदर walk है. Look at this. Even camera can capture it, but Camera? can't capture this but when you see with your own eyes, it's so much pretty and better. But if you are driving to the botanical gardens in Jerusalem, मेरे पीछे ही there's like a big parking lot. So you can also come that, but it is super accessible by bus. Guys, look at this beautiful entrance. I can't believe it. देखिए guys, we are at the entrance. Can't wait. Can you believe this is in Israel? जहाँ पे रेत है, desert है, and they have created something like this. So much to learn from. Guys, I swear, मैंने इतना सारा shades of green नहीं देखा है जिंदगी में. I mean, yes, maybe, but like in the longest time I haven't. मैं अभी आपको flip करके दिखाऊंगी कैमरा. Just wait for it. It is so beautiful. So beautiful. We have made it to the beautiful garden of Lotus. So, what do you feel about this beautiful? It is beautiful, View. but it honestly scares me because I don't know what is there in the water. So yeah, Does it remind you of Anaconda it does. or any crazy crocodiles or whatever? But I don't think But they. it is pretty. It is really pretty. So pretty. So till I take you to the next spot, मैं आपको आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी. तो हम यहाँ पे सिर्फ लोटस देखने नहीं आए हैं. यहाँ पे पूरा एक बोटानिकल गार्डन है. लेकिन the Indian Embassy
has, I think, in partnership with the Botanical Gardens in Jerusalem, hosted a lotus festival. And Lotus se yaad aaya, it is one of the most gorgeous, elegant, delicate flowers. और भारत में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. नंबर वन रीज़न वी ऑल नो बिकॉज इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया एंड इट इज़ स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें हैं. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इंडियन इज जो एलिमेंट्स होते हैं ना इजराइल में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माई डुअल आइडेंटिटी इंडियन एंड इजरायली कि मुझे वो एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. और ये नई नई चीज़ें इट सॉर्ट ऑफ gets me to think about the culture that I come from. तो usually जब इजराइल में जब लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं ना, they think about yoga, Indian cinema, Indian food. But there is one specific thing that doesn't get talked about enough, and that is in the field of mathematics. और फिर मुझे मैथ से याद आया कि there is a very important thing that I would like to share with you guys. And very recently I came across a math champion from India, Mr. Neelakanta Bhanu. एक fascinating चीज उनके बारे में है कि उनके पास इतने सारे रिकॉर्ड्स है, बट उन्होंने अपने नॉलेज का क्या इस्तेमाल करा है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. उन्होंने ये एक सवाल पूछा, अगर एक बंदा मैथ्स में इतना अच्छा हो सकता है तो बाकी सब क्यों नहीं हो सकते. और वो सोच लेके उन्होंने भांजू क्रिएट किया. तो शुरुआत हुई गवर्नमेंट स्कूल से लेके. तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनका पास रेट था 0. तो उन्होंने ऐसे सोचा, बैक ट्रैक किया कि ये बच्चों वाला प्रॉब्लम है या मैथ्स कैसे सिखाया जाता है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है. बट लेट्स अग्री, रियलिटी कुछ अलग ही है और ये मेरे साथ भी हुआ है. मैथमेटिक्स ये सिखाया नहीं गया था, ये रट्टा कैसे मारना है, मेमोराइज कैसे करना है, ये सिखाया जाता था. तो मिस्टर भानु है, उन्होंने उनके टीम के साथ ये मैथमेटिक्स का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है पूरा रीइमेजिन करके उसको इम्प्लीमेंट करा है. तो ऑलमोस्ट 50 अलग अलग लर्निंग टेक्निक्स के बाद उन्होंने ट्राई एंड टेस्ट किया. एंड व्हाट दे फाउंड आउट वाज, उन्होंने कैसे सिखाया कि नंबर्स क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है और रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है, ये उन्होंने उनको सिखाया. आप यकीन नहीं करोगे, बस विद इन 60 डेज जो गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था जहाँ पे 0 पास रेट था. फ्रॉम 0 पास रेट इट बिकेम टू 23% पास रेट. कैन यू बिलीव इट. एक बात ध्यान में रखिए, इट डिड नॉट चेंज द चिल्ड्रन. ये बच्चों को चेंज नहीं करा है, बस वो लर्निंग एक्सपीरियंस उनका वो उन्होंने चेंज करा. So now this learning experience has expanded to various countries like USA, Canada, UK, Australia. ये जो specific program है ये build किया गया है for kids between the age of 5 to 15 because this is a very important age range while kids are growing up. So instead of ratta marna, what they usually focus is on different learning techniques like visual learning, logical reasoning, puzzles, interactive activities like AI powered learning support and brain gym activities. तो आप जब अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, उनके स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हो, इतना याद रखना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लासरूम मार्कशीट. It can help them in university, it can help them in their career, and it can help them in their future life opportunities. So, if you are a parent who has a child between 5 to 15 years of age, I would highly recommend trying a free trial class. और अगर आप decide करते हैं to enroll for the full course, after the trial class, using my link, you get a 20% discount. So if you're interested, the link is in my description and it is also added as a pinned comment. Okay, तो यहाँ पे ना there are different species. Water lilies भी है और lotus भी है. I don't clearly understand the difference, but they feel like they are cousins. एक सेकंड आपको दिखाती हूँ. तो अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, ये lotus है, ठीक है? And I don't know what this species is. Is this lavender? It looks like lavender. I have no idea. And this, my friends, I think is water lilies. They're so pretty and they look also very similar. But ये बहुत बड़ा confusion हो सकता है. तो आप जाके comment section में डालिए what do you think A is and what do you think B is. And also C. We found the answer. It is clearly not lavender, but looks like it. But it is this plant. Clearly, my sister is leading the tour for today. It does. But हमने कितना पे करा अभी? 40 shekels per person. 40 shekels per person. I think it's not so bad for this beautiful place. और हमने एक मैप भी कलेक्ट करा है. और अब हम जा रहे हैं
towards, I'll show you right now. It's the Japanese gardens. ठीक है, let's go to Japan and see what they have to offer. So my sister always wanted to go to Japan. हम अब तक जापान जा तो नहीं पाए, लेकिन जापान यहाँ पे तो बिल्कुल आ गया है. Guys, look at this beautiful infrastructure. A piece of Japan in Jerusalem. तो ये जो पीछे वाला जगह है ना, ये बंद था for some reason. So now we are going to a bonsai display. Ooh, cute. कितने अलग अलग तरीके के बॉन्साई होते हैं, देखो. मुझे इतना नॉलेज नहीं है प्लांट्स एंड ट्रीज का, बट आई रिमेम्बर स्टडिंग अबाउट देम, बट आई मीन नॉट इन डिटेल. हाँ, Student of the year. कराटे किड. Yeah, bonsai. And even in student of the year, don't you remember? I The don't. Dean used to grow a bonsai. करेक्ट. ऐसे आप यहाँ पे थोड़ा नीचे चल के आते हो ना, वहाँ से देयर इज अ क्यूट लिटिल फाउंटेन जहाँ पे आप थोड़ा चिल कर सकते हो. एंड आई थिंक दिस इज अ नाइस प्लेस फॉर बर्ड्स. व्हाट मिरेकल वाटर? The mossy miracle water. Mossy? Oh, moss. Right. But I think the birds are able to drink from this. I don't think they have an issue. They don't fall sick. Or maybe. I don't know. It's a ginger cat. Hello. Clearly. Hi. Clearly. Not interested. She's interested in me though. See. So that means I'm also the favorite child and also people's favorite person. Wow. Bye, kitty. See you next time. Cute सा waterfall है यहाँ पे. I don't think you can jump in, but it's quite refreshing. We have a big challenge because my sister is scared of reptilians, crawlies. तो हम ऐसे जब चलते ना बीच में, बाजू में क्योंकि ग्रास है और फ्लावर्स और शॉप्स है, तो उसको लगता है कि कहीं से भी कुछ भी ऐसे उड़ के आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज लाइक इन द मिडल ऑफ नोवेयर, तो उसको लग रहा है कि भाई देयर इज गोइंग टू बी अ बी दैट इज गोइंग टू स्टिंग हर, और देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ स्लिदरिंग स्नेक जो उसको काटेगा. हु नोज. बट या इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर. मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू लाइक रीड इट एक्यूरेटली ताकि आपको मैं बता पाऊँ. जहाँ पे हम है अभी, जेरूसलम बोटैनिकल गार्डन्स, यहाँ पे अराउंड 7,000 प्लांट स्पीसीज है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और उन्होंने ऐसा कहा है कि दिस कलेक्शन इज extremely valuable to research as well as insurance policy against disappearance of endangered species. How thoughtful. और ये जो botanical garden है, they play many roles, but I think one of them is to spark interest in plants and their special story and their importance. So I think it is a very thoughtful vision of why they needed this botanical gardens. और एक चीज बताना चाहूंगी, I don't know if you can see a train right here. बच्चे बैठे हैं वैसे और पेरेंट्स बैठे हैं, लेकिन I think this is especially for kids and even for adults who would want to go around the garden nicely and you know, किसी को चलना नहीं है, लेजी लग रहा है, तो ये ट्रेन ले सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि the lotus is the king of the lake and I 100% agree. देखिए गाइस, यहाँ पे इजराइल में और एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे मैंने आपको दिखाया था ट्रैवल का जो बोर्ड था ना, वहाँ पे भी वैसे ही था और यहाँ पे भी वैसे ही है. हिब्रू, अरबिक और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेजेस में इनके एक्सप्लेनेशंस और ट्रांसलेशंस होते हैं. सो इट इज अ गुड वे फॉर मेनी पीपल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे है क्या एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. गाइस, आपको और एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक लोटस फेस्टिवल करके द इंडियन एम्बेसी इन इजराइल जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पूरा मतलब 2-3 वीक का फेस्टिवल यहाँ पे रखा हुआ है. और आई थिंक देयर आर 2 more days. वी हैव कम ऑन द 9th, तो 10 और 11 तारीख को भी होने वाला है. लेकिन इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन एम्बेसी एंड ऑल्सो द इंडियन कल्चरल सेंटर ऑफ टेल अवीव एंड द बोटैनिकल गार्डन्स, सबका पार्टनरशिप लेके यहाँ पे दे डू सम डांसिंग, इंडियन फूड, इंडियन म्यूजिक, ऐसे मिनी फेस्टिवल इनसाइड दिस गार्डन. तो always watch out for any events from the embassy because they do a lot of cool stuff. तो हमने अभी डिसाइड करा है कि हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे. They're also very hungry, so we have come to a small cute cafe. But इनके जो prices है ना, देख के
बट वी लाइक कि हम एक ही बार आए तो व्हाई नॉट. My date for today. ये है हमारा खाना, fish and chips with a couple of sauces and fried cauliflower. See, the goal of living in Israel is never convert to Indian rupees. नहीं तो आप जी ही नहीं पाओगे. अब यहाँ पे बजे हैं 12 और हम निकले हैं यहाँ से from the botanical gardens in Jerusalem. We are now going to the biblical zoo. It is a very interesting zoo. Why, Tovina? Because I am obsessed with animals and I like seeing animals. This is why we are going. But why is it called the biblical zoo? Because you have the animals from the Bible, like the Noah's Ark, the animals they have in it, like exactly those ones. Oh, how amazing. Guys, हम आ चुके हैं zoo. It is the Tish Family Zoological Gardens in Jerusalem, also known as the Biblical Zoo. Guys, ये देखो Voldemort वाला Slytherin. ये है Fields Horned Viper Nagini. But this is like albino. What? Horns. Yeah. like, okay. Yeah, right there. It's scary. There's a black tail as well. You see, on the side. Guys, the funniest thing about this is they were completely camouflaged, but if you can see, यहाँ पे 2 है, like चढ़ रहे हैं, अभी तो 3 आ गए हैं. This is a fat sand rat. That's crazy. पूरा camouflage ही था. ये देखो परिवार of 5, 3 and 2 एक खेल रहा है मजे में. ये है chameleon. It is a Mediterranean. क्या what is it called? Mediterranean chameleon. Guys, we found another viper. ये बहुत बड़ा है. Like you can't actually. Yeah, this is the Israeli viper. You can't really tell from the camera, but it's really big. It's not done. This is like the real life Nagini from Voldemort. I don't know if you guys can see, but वो नीचे है ना खाना इसको एक he has a rat. I don't know I can see it, but like he's choking the rat and he's gonna eat it soon. जो अपने अभी python देखा, it's the Burmese python and it only eats like once in 2 months. So we got lucky. We came during his lunchtime and that was his 5th rat. Oh look, this is a Nile crocodile. Got time. I'm not really. He's using a sack to cover himself because it's so hot. למעלה מתחיל להתעורר לו, נראה לי הוא מדבנה לו ראשון. אם הוא קופץ לו. הנה, גם הוא שמתכספת. למה גוי? So many. אל תתני לו, תרגישי. It's like a lazy... בוא, send לי. כן, חבר שלי. On point, bro. That's crazy. Ooh. Oh my god. Guys, अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पूरा जू का मैप है. मैं यहाँ पे शुरू करा था और हम अभी तक इतना ही चले हैं और ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा हो गया है और हमें ये अब पूरा करना बाकी है. जो मेन एनिमल्स है लायन, टाइगर, elephant, deer, bear, all of that is still pending. So stay tuned. And एक open aviary में आ चुके हैं. We're not allowed to touch the birds, but we can like film them and stuff. Super cool. They are doing their own thing, eating, playing with each other. Very cool. यहाँ पे एक पूरा झुंड का झुंड बैठा है. परिवार चिल कर रहे, पानी पी रहे, मजे मार रहे. और ये वाह, क्या बात है. नहा रहा है वो, चिल कर रहा है अपने छोटी से फाउंटेन में. Guys, more. So pretty.
The National Board of India is here, my friends. So beautiful. Alright, we have spotted a leopard. It took us like 10 seconds to see where he or she was, but it's gorgeous. That's pretty eyelashes. Yeah, it's a girl. No, but boys have long eyelashes also, so you never know. That is insane. He's going inside. यहाँ पे देखना एक पूरी डियर की फैमिली बैठी है यहाँ पे चिल कर रही है. बहुत गर्मी भी है यहाँ पे, बट लेट मी जूम इन सो दैट आई कैन शो इट टू यू. गाइस हम यहाँ पे चल रहे थे एंड लुक व्हाट वी स्पॉटेड. लुक राइनो भी अभी रेस्ट कर रहा है, बट इट्स ह्यूज. एंड फाइनली वी स्पॉटेड द जिराफ. इतने सुंदर है यार ये. Creation of God, so beautiful. Spotted another rhino chilling with the giraffes. Are they gonna bump heads? Who knows? I think they're all friends. Sit around and she is their backs. What wagyu? A few hours later. Hi guys, I am back. We are back home. हमें भागना पड़ा क्योंकि we were in Jerusalem and we had to come back to Tel Aviv. And बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी. So वो सब घाई में रह गया. But I want to tell you that I had an awesome day and I hope you guys did too. I hope आपको ये vlog अच्छा लगा Sisters Day Out वाला. अगर आपको लगता है कि मैंने और vlog ऐसे ही डालने चाहिए मेरे चैनल पे, जाके कमेंट सेक्शन में डालिए दैट यस वी वांट टू सी मोर व्लॉग्स और मैं बनाऊंगी और व्लॉग्स आपके लिए. इन द मीन टाइम स्टे सेफ, वॉच द राइट कंटेंट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.